Now let us look at the applications of Seebeck effect. There are two main applications. One is called thermocouple. Essentially, in a thermocouple, you happen to take a copper wire, and the other wire which you happen to take, that is constant tan. थर्मोकपल डिवाइस हमारे डिस्कशन में 11th के थर्मोमेट्री के चैप्टर में पहली बार आता है, वेयर वी मेंशन दैट दिस इज अ डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर. थर्मोकपल, दिस इज अ डिवाइस टू मेजर फास्ट फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स. फास्ट fluctuating temperatures. What is the principle behind it? जब हम 11th में डिस्कस करते हैं तो उस समय में ये प्रॉमिस करते हैं कि later in 12th we will discuss that. The aspects happens to be one junction is kept in ice. This is kept at ice temperature. So this will work as cold junction temperature, and this junction is fixed on that particular object whose temperature you want to measure. Then a current flows into that. आपके पास एक पूरी चार्ट होती है जिसमें फॉर ए पर्टिकुलर करंट इसकी क्या टेम्परेचर की वैल्यू है वो एडवांस में आपको दी हुई होती है. यू ऑलरेडी हैव अ चार्ट इन विच टेम्परेचर एंड करंट आर टेबुलेटेड. नाउ वट एवर वैल्यू ऑफ करंट यू सी, same amount of temperature you have to indicate for that. In case this temperature is fluctuating very fast, अगर ये temperature बहुत ज्यादा fluctuate कर रही है तो temperature की fluctuation की वजह से जो current की fluctuation है वो भी बहुत ही easily sense हो जाती है. And remember that it is not only the fast fluctuating temperatures, rather remember that if you can get any signal in the form of current, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे हमें temperature current के form में मिल रहा है, then by remote control you can control as well as sense the temperature or tabulate the temperature of far off areas. Let's suppose किसी जगह कोई ऐसी सिचुएशन जहां आप खुद नहीं पहुंच सकते, तो वहां पे अगर ये हमारा जंक्शन लगाया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है, then the entire current flow can be recorded by a computer and it can be sent to distant places without being present there. ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज होती है थर्मोकपल्स की, इन विच टेम्परेचर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ करंट एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर रिप्रेजेंटेशन. आप उसको पूरी वीडियो पे दिखा सकते हैं, टेम्परेचर क्लॉक की तरह यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन. दिस इज द वेरी बिग एडवांटेज ऑफ थर्मोकपल. इट इज एसेंशियली बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट. व्हाई? बिकॉज आपने यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज किया और इसमें करंट फ्लो कर रही है. नाउ समटाइम्स इट मे हैपन that the current which is coming here is not having a very, you can say, sharp value. Sharp value means, let us suppose temperature has changed by a very small amount, then maybe the current change is not so high that it can be sensed. कई बार आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो यहां टेम्परेचर चेंज हुआ है उसकी वजह से यहां पे जो करंट चेंज हुआ वो इतना छोटा था कि आप उसको सेंस ही नहीं कर पा रहे. देन वी हैव अदर डिवाइस विच इज कॉल्ड थर्मोपाइल. थर्मोकपल की डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि टेम्परेचर की जो चेंज से करंट की चेंज है वो सेंस नहीं हम कर पा रहे. देन वी कैन यूज अनदर डिवाइस विच इज कॉल्ड थर्मोपाइल. थर्मोपाइल एसेंशियली कोई न्यू डिवाइस नहीं है. इट इज समथिंग लाइक अ नंबर ऑफ थर्मोकपल्स कनेक्टेड टुगेदर. थर्मोपाइल
is basically a number of thermocouples connected together. What is the meaning of this? What is the advantage of this? अगर हम कई थर्मोकपल्स को एक साथ कनेक्ट करके उस जंक्शन पे, हॉट जंक्शन पे रखेंगे तो सबकी करंट ऐड होगी, एंड इन दैट केस इवन द स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी सेंस्ड, क्योंकि अब कई थर्मोकपल्स अपने अपने करंट को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, देन देयर विल बी सम एप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ दैट करंट एंड दैट कैन बी सेंस्ड. सो एसेंशियली यू शुड अंडरस्टैंड that thermocouple and thermopile, they are one of the same thing. They measure the temperature. Thermocouple की accuracy बहुत अच्छी नहीं होती, sensitivity बहुत अच्छी नहीं होती. Thermopile की sensitivity ज़्यादा अच्छी होती है. The third application you can have is that called thermoelectric generator. Thermoelectric generator. At this juncture, let me remind you, when we use the word generator etc., जब हम generator word use करते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे घर में जो यूज जनरेटर होती है वो घूमती है. आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि शायद हमारे घर के जनरेटर को ये टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है. नो, लेट मी रिमाइंड यू दैट दीज एप्लीकेशंस आर वेरी माइक्रोस्कोपिक. हियर the current which is produced, here the voltage which is produced, that is microvolts, millivolts. बहुत ही छोटी वोल्टेजेस प्रोड्यूस्ड होती हैं. बहुत माइक्रोस्कोपिक एप्लीकेशंस में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. हमारे घर की सप्लाई मिनिमम 220 वोल्ट होती है, 110 वोल्ट होती है. इतनी ज्यादा वोल्टेज यहां जनरेट नहीं होती. यहां पे जो भी चीजें डेवलप हो रही हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है. करंट बहुत ही छोटा है, वोल्टेज बहुत ही छोटे हैं. रिमेंबर दैट, है ना. So thermoelectric generator essentially is what? That here you are giving heat and current is produced. एक घर की जनरेटर में भी यही होता है. In a household generator you happen to provide heat, maybe by some fuel, and a current is produced. Here also you are providing heat and some current is produced. But the biggest advantage is that it's a noise free production of current. ये noise free application है, इसमें कोई moving parts नहीं है, कोई noise नहीं है, कोई pollution नहीं है. इसी की वजह से ये popular हो सकता है, provided it comes in a larger scale. But right now this is on a very small scale. You understand? Now these are the things related to Seebeck effect. Now let us discuss the second effect, that is called Peltier effect. Now let us discuss the second effect, that is Peltier effect. You can say Peltier effect is reverse of Seebeck effect. In a rough sense you can say it is reverse of Seebeck effect. Seebeck effect में क्या था? Seebeck effect में था कि आपने हीट दिया था और करंट प्रोड्यूस हुई थी. बट पेल्टियर इफेक्ट में आप उसी जंक्शन में करंट प्रोवाइड करते हैं और हीट एंड कोल्ड डेवलप होता है. लेट अस सपोज यू हैव द सेम जंक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन, और लेट अस सपोज यहां पे आप करंट आई ऐसे फ्लो कराते हैं. हियर आई मस्ट राइट कॉज इज करंट, cause is current, and effect is
heat, hot or cold junction. Here you will find a cold junction has been produced. Here you will find hot junction has been produced. And in Seebeck effect, this is Peltier. Remember that this is Peltier effect. And the Seebeck effect, just now you have discussed. This was copper, this was iron. You were keeping it hot and cold, and current was flowing. Here cause was hot cold junction. Here cause was hot cold junction, and effect was current. You see, I am trying to compare Seebeck effect with Peltier effect. So you see here, in Peltier effect you are giving current and a hot cold junction is getting produced, but in Seebeck effect you were providing hot and cold junction and current was getting produced. You understand? Now if you carefully see these two diagrams, then for the same direction of current, आप यहां देखिए कॉपर आयरन है, कॉपर आयरन है, यहां पे सेम डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हमने यहां हॉट एंड कोल्ड लिखा है, लेकिन यहां पे हमने कोल्ड एंड हॉट लिखा है. आप देख रहे हैं यहां पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो कोल्ड जंक्शन के पास है, यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हॉट जंक्शन के थ्रू है. नाउ व्हाई दिस पोलैरिटी इज चेंजिंग? पोलैरिटी के चेंज होने का रीजन क्या है उसको डिस्कस करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाई दिस थर्मोइलेक्ट्रिसिटी इज हैपनिंग एट ऑल. अगर हम हीट देते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है. दी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, दी माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म, रफली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हो सकता है हीट या कोल्ड की वजह से जो यहां के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, यहां के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होता है. द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डिस्टर्ब. समवेयर दे आर एक्यूमुलेटेड मोर, समवेयर दे आर एक्यूमुलेटेड लेस. देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक मेटल के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती है. मेटल दो डिफरेंट जो है उनके जंक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जा सकती है, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस फ्लो ऑफ करंट इज टेकिंग प्लेस. नाउ in case you look at this particular aspect, then this aspect says that if the current is flowing in this direction, यहां पे अगर आप गौर से देखें तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इस जंक्शन की टेंडेंसी हीट को एब्जॉर्ब करने की है और यहां से हीट रिलीज हो रहा होगा. यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज आपने यहां से हीट दिया था. इसका मतलब यह है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे तो इस जंक्शन की टेंडेंसी हीट को एब्जॉर्ब करने की है और यहां से हीट रिलीज करने की है. पहले चूंकि आपने यहां पे आइस लगा रखा था तो आइस लगाए रखने की वजह से ये आइस धीरे धीरे मेल्ट कर रहा होगा, यहां की सारी हीट यहां ट्रांसफर हो रही होगी. इजंट इट? नाउ इस जगह आपने क्या किया, एट दिस प्लेस आपने बाहर से कुछ हीट दिया नहीं एंड यू आर फ्लोइंग द सेम करंट. आपने बाहर से कोई हीट दी नहीं और इस जंक्शन की हीट एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी है. इजंट इट? दिस जंक्शन हैज हीट एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी. हीट एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी. और आपने बाहर से हीट दिया नहीं, देन वी से दैट इसने अपनी खुद की हीट को यहां से लेके यहां ट्रांसफर कर दिया. इफ यू आर फ्लोइंग द सेम करंट and no external heat is given, then it is taking out its own heat. This junction is taking out its own heat and transferring to this place, and that is why this has become cold and this has become hot. You understand? So be very much clear about this fact that Seebeck effect में hot and cold की जो position थी उसके just reverse position Peltier effect में है for the same direction of current. This is first thing you should make very clear in your mind कि ये दोनों इफेक्ट रिवर्सिबल हैं. और सीबेक इफेक्ट में आपने हीट दी थी, करंट प्रोड्यूस हुआ था, यहां पे आपने करंट प्रोवाइड किया है और
hot and cold junction achieve हुए हैं, which I have written here. That was the basic difference between Peltier effect and Seebeck effect. Now let us define some of the used terminology here. Terminology is very simple. We define a quantity called Peltier coefficient. We define a quantity called Peltier coefficient. Peltier coefficient is generally denoted by pi. Peltier coefficient we happen to generally indicate by pi. Maybe P stands for Peltier, P stands for pi. Easy to remember. This says heat or cold involved upon charge flown. पेल्टियर इफेक्ट में आप करंट फ्लो कर रहे हैं, एसेंशियली आप चार्ज फ्लो कर रहे हैं. तो चार्ज फ्लो करने की वजह से वट एवर अमाउंट ऑफ हीट और कोल्ड हैज बीन प्रोड्यूस्ड, दैट इज इंडिकेटेड बाय पेल्टियर कोएफिशिएंट. इफ यू लुक एट द यूनिट ऑफ दिस, then you know that heat is joule and charge is coulomb. So you can compare this unit with volt as well, because you see joule per coulomb is also called volt. So Peltier coefficient and the unit volt, they are having same dimensional formula. You understand? Now look at the practical applications of Peltier effect. Now let us look at the practical applications of Peltier effect. There is one single major application for this, is called thermoelectric refrigerator. Thermoelectric refrigerator. Again, I will warn you that with the word refrigerator, do not become too much optimistic. आपको बहुत ज्यादा होप रखने की जरूरत नहीं है कि रेफ्रिजरेटर है तो आपके माइंड में हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर वो पिक्चर में आ जाता है. नो, घर की जो रेफ्रिजरेटर है, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर जो है, उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है. इट्स कैपेसिटी इज वेरी लार्ज. इट कैन प्रोवाइड कूलिंग इन अ वेरी लार्ज एरिया. बट जो थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, अगेन वी विल से दिस इज जस्ट अ माइक्रोस्कोपिक एप्लीकेशन. हाउ? For example, you said that, okay, copper and iron is here and you are providing current in this direction. So this junction is becoming hot and this junction is becoming cold. So you can see this is a small area. This is a small area in which you can provide a low temperature by passing current. हमारे घर के भी रेफ्रिजरेटर में आप जब करंट पास करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में लो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है. एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी इफ यू आर पासिंग करंट, देन इन अ वेरी स्मॉल एरिया अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक. आई विल हाईलाइट दिस फैक्ट दैट दिस इज जस्ट द माइक्रोस्कोपिक एप्लीकेशन. एक बहुत छोटी सी एरिया में आप लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं. Only advantage is that there is no moving parts, no pollution, no noise. This is the major advantage of that. Without having those things, you can produce low temperature in a very small area by providing current, and that is the essential principle of a refrigerator. So this is the only application we study
related to Peltier effect. Now let us deal with the third effect, that was called Thomson effect. Now let us discuss the third effect, that is called Thomson effect. Thomson effect and Seebeck effect have some sort of, you can say, similar nature. Similar nature in the sense, in Thomson effect, in a single metal, two points are maintained at different temperatures. 2 points are maintained at different temperatures, and a potential difference is created between them. You understand? In Seebeck effect, it was two different junctions. Here, there is a single material. In Seebeck effect, you had two different materials. But here you have a single material, and on the single material between 2 points, you are maintaining temperature difference. So it may look like this. Let us suppose you have a metal strip. This is a metal. And say I have taken one point, this point 1, and there is another point 2. Say I made it hot and I made it cold. Then you will find that some potential difference is produced between these 2 points. I am writing here, potential difference is created, and this is essentially Thomson effect. Some people say that it is positive Thomson effect when hot junction maintains higher potential. Sometimes it is negative Thomson effect, that means hot junction is maintaining lower potential. So you see, it is not as such that hot junction is at high potential and low temperature junction is at low potential. ऐसी कोई बात नहीं है. हॉट जंक्शन पे हाई पोटेंशियल भी हो सकता है, हॉट जंक्शन पे लो पोटेंशियल भी हो सकता है. अकॉर्डिंगली दे आर नेम्ड एज पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट और नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट, डजंट मैटर. The main thing you have to remember here is what is the meaning of Thomson coefficient. So we define Thomson coefficient as, the popular notation for Thomson coefficient is sigma. Thomson coefficient as, what is the potential difference between these 2 points? Say I am calling it dV. Potential difference. What is the potential difference created between these 2 points? And what is the temperature difference between these 2 points? dt. Understand? Potential difference upon the temperature difference between these 2 points. That is called Thomson coefficient. If you talk about the unit of this, then unit can be written as volt per degree Celsius. You can clearly see that Seebeck effect or thermoelectric power and Thomson coefficient, Seebeck coefficient and Thomson coefficient, they have same dimensional formula. Volt per degree Celsius, here it is. Volt per degree Celsius, there it was. You understand? So if you talk about the application part of this, then again you can say that it can be used as thermoelectric generator, as you had in Seebeck effect, that you provided certain temperature difference and some potential difference was obtained. So
this is all about the thermoelectricity part, in which we discussed Seebeck effect, Peltier effect and Thomson effect. Now in today's lecture, the second aspect we are covering, that is the chemical effects of current. So let us look at that.